तो मैंने जो अपनी रिकॉर्डिंग बनाई थी कल, एंड अगर चांस मिला आप लोगों को उसको देखने का, तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑलवेज ऑलवेज क्रिएट द एज इज आर्किटेक्चर। और एज इज आर्किटेक्चर ये तब रिक्वायर्ड है when you are migrating. There could be scenario where you are not migrating, where the idea is that you, sorry ये क्या हो गया, let me restart. When you're not migrating, अगर आप migrate नहीं कर रहे then you don't need, और ये आपको problem statement बताएगी कि how you're going to get started. ठीक है, तो always if you're migrating, your starting point is as is architecture, and somebody can tell you we need a cloud native solution, you are starting from scratch, or whatever we have, we don't want to migrate, we want to rebuild the solution from scratch using cloud native technologies. And this is also one of the big trends. When you have time, when the current stuff is stable, आपको कोई emergency नहीं है, you can say we want to build the cloud native solution using cloud native services. Okay, then you don't need to go through this exercise. Always analyze, always analyze. ठीक है, उसके अंदर when you're building cloud native solution you have lot of flexibility from IaaS, from PaaS and from different things, right? So keep those things in mind कि जब आपको cloud native solution मिल रहा है, you have an open playground, you have an open area, you can do whatever you want to. ये बड़ा critical चीज़ है, आपकी कोई limitations नहीं है. और if you look at from limitation perspective, जब हमने डेटा सर्विसेज भी पढ़ी थी, लेट्स लुक इनटू द डेटा सर्विसेज फॉर अ सेकंड. डेटा सर्विसेज, हमने डेटा सर्विसेज भी पढ़ी थी. these are important points to keep in mind. ठीक है, pay attention to the to these things, to the motivations and the usages. ठीक है, please pay attention. You should know when you need to use something. Okay, यहाँ पे हमारी मोटिवेशन थी VM के लिए माइग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, और इसके अंदर मैंने दो रीजंस बताई थी आपको बड़ी स्पेसिफिक. आई विल रिपीट देम. जब आपके पास जो वेंडर है, जो एप्लीकेशन वेंडर है, वो आपको बताता है कि आई कैन नॉट सपोर्ट दिस एप्लीकेशन ऑन PaaS एनवायरनमेंट, देन यू मस्ट यूज़ द VM. दूसरी मैंने बताई थी कि रीज़न जो मैंने बताई थी, यू नीड OS लेवल एक्सेस फॉर वट एवर रीज़न. और उसके अंदर मैंने आपको एक बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल बताई थी. वो ये थी, क्योंकि वी आर डीलिंग विद SQL सर्वर ऑन अ वर्चुअल मशीन, तो उसके अंदर जो मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल बताई थी कि SQL सर्वर हैज समथिंग कॉल्ड फ्री टेक्स्ट सर्च. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग. ओके, SQL सर्वर के अंदर फ्री टेक्स्ट सर्च है. I will open this one. SQL Server. You should know this one, this feature, at least at a high level. What does it do? Okay. Full text search. So your SQL Server database are full text enabled by default. और बेसिकली क्या करता है आपको कि it allows you to do text based searching. तो आपको जो भी डेटा है, it can do indexing of that data as text data. उसके बाद आपको records ला के दिखा देगा कि this is shown here, right? It can index everything as so you can see it gives a full text index on tables.
ठीक है, कैटलॉग बनाते हैं, फुल टेक्स्ट कैटलॉग, create a full text index. So the idea is you can do searching as a text. आपको यूजली हम क्या करते हैं, हम तो क्वेरी लिखते हैं, select this thing from customers where this and this, right? But what we do in a full text situation, let me see, query with full text search, right? अब आपने कहा कि ये आपने ये उसका क्वेरी किया and contains mountain free text, यहाँ पे ये मुझे ये string मिल जाए उसके अंदर, ठीक है, and various different things. Again, I don't want to go into these details, ये हमने पढ़ी नहीं है, but I just want you to understand the feature. Okay, तो ये feature जो है, idea is it allows you to do free text, full text searching. और हमने ये बताया था that it can index documents from office documents, and to do the indexing of documents it needs what we call filters. So by default SQL Server comes with filters for office documents. Let me see if I can show that one. ये मैंने दिखाया था वैसे क्लास में भी कि of create indexes, इसके अंदर for the language basically, इसके अंदर जो document types हैं. So it's a very nice feature in SQL Server. You can do these things. इसके अंदर जो मेन चीज़ मैंने दिखानी थी वो ये थी कि अगर अपने PDF डॉक्यूमेंट्स, नॉन माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स आपने इसके अंदर इंडेक्स करने हैं, then you need PDF. For example, let's say you have PDF document, which is very common. तो PDF को it cannot index. उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए PDFs का indexer चाहिए. I think it's called iFilter or something. Let me see what the exact word is. You don't need to know, like in just I just want to SQL Server free text search. I think it's full text search. PDF. And it can do various different languages. Let's see what the PDF file is, right? Let me see. I just want to see iFilter. You need to have the PDF iFilter in the path. और ये path कहाँ से आता है? This is just for your own information, ताकि SQL Server को मिल जाए ये. If you go look at यहाँ पे अगर आप जाओ ना environment variables, यहाँ पे आपके environment variables, यहाँ पे path है, ठीक है? This is just as a side information. Any executable, if it needs to find any libraries, that those libraries and executables needs to be on the path. और ये user level है, and this is system level, and generally we set it at the system level. Like it is anybody can find this one. तो आप ये देख लो, इसमें different path variables हैं for everyone. Any user by default he'll get these executables by default. So for example, if इसका क्या फ़ायदा होता है? Sorry, हम ज़रा साइड टॉपिक में जा रहे हैं, nothing to do with exam, but just to show you, ये important operating system की वो है. अगर मैं कहूँ notepad, why I'm able to open notepad? Because it is in the path. ठीक है, ये मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ गया, ये खुल गया यहाँ पे, ठीक है. It is in the path. So I can say, let me see which notepad, which is not here. Yeah, उसका है Linux का, Unix का command है. Anyway, so idea is you can run any command, any program from anywhere as long as it is available. उसका path यहाँ पे set हुआ है, ठीक है? That's the idea. Anyway, ये side information थी. Main चीज़ है, you need to install the iFilter for PDF, okay? और indexing filter for PDF. और उसके बाद SQL Server can index PDF documents, and so on and so forth. I mean, whatever document you want to index, you need to install the iFilter, and then SQL Server is able to index those documents as well.
तो दैट्स द हाई लेवल आइडिया. तो SQL सर्वर का फीचर है फुल टेक्स्ट सर्च. इट अलाउज यू टू डू text based searching instead of query based searching. It can index all the content as text, and then it can find out the rows and all that where that data exists. Okay, documents, various different things it can index. So for example, I can ask you कि आपको अब lot of time we have brochures in university and all that, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, तो उसके अंदर lot of time we are trying to find ये कौन सा ब्रोशर है, मुझे किसके लिए चाहिए. wouldn't it be nice कि आप सर्च करो जी BScs मास्टर्स and AI, and maybe it can give you the exact document with the brochure for the AI masters का जो courses हैं यहाँ पे list है, right? Just one PDF document and you can get that one, right? And you can download that one directly. So that's the beauty of this solution. So this is what you need to think about when you are looking into these things, how you can use this one, how you can build solutions like this, right? So you understand how the solutions are, and then you see how you can utilize this in your architecture, in your solutions to your organization. तो ये था. So let's go back. तो यहाँ पे आपने जो important चीज़ यहाँ पे देखनी है कि when you will use what, you should know this stuff, right? कि मैं VMs को, तो हमने यहाँ पे बात शुरू हुई थी यहाँ से कि मैं VM क्यों लूँगा. So एक तो guaranteed compatibility है SQL Server on premises, because वहाँ पे भी VM है, यहाँ पे भी वर्चुअल मशीन है, ठीक है. यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा. यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, OS अपग्रेड्स, बैकअप्स, एवरीथिंग. इसके अंदर मैंने आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स बताए थे. व्हेन यू आर फोर्स्ड, तो वो दो क्या अगेन रीजंस हैं कि आपका जो है यू नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट SQL सर्वर रिक्वायर्स फॉर इट्स फंक्शनैलिटी. और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये PDF की. यू नीड टू इंस्टॉल PDF आई फिल्टर. If it's a PaaS service, you don't have access to the operating system. Then you don't have that capability. So in this case, you must do this one. Second one is software vendor है, उसने कहा जी मेरी एप्लीकेशन जो है वो PaaS सॉफ्टवेयर पे नहीं चलेगी. ये मैंने आपको केस स्टडी में भी दिया था, जो उसमें था कि उसने कहा जी मैं हमारा ये उसमें नहीं चलेगा. तो या एक में एक वर्जन था चलेगा, एक में था कि नहीं चलेगा. बट रिगार्डलेस सॉफ्टवेयर वेंडर कैन से नो यू कैन नॉट यूज PaaS software. Software on as a PaaS service. Then you must use, to keep the system in a supported state, you must put them in a SQL Server VM. MI is a PaaS service, but with almost 100% compatibility. और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि what does this thing mean. और इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, राइट? व्हेन वी से नियर 100%, व्हाट इज द डिफरेंस. और वो इंफॉर्मेशन थी इन दिस डेक. हमने बताया था कि देयर मेनी थिंग्स which are not available in Azure SQL, which is the cloud native solution. Cloud native solution जो Azure SQL, it is not there, right? जो हमने कहा था, for example, let me go back into this one. Great for new cloud-based applications. And इसका हमने कहा था compatible is only with the core database function, nothing else. It's the database engine only. What does it mean? What else SQL Server has? And we discuss this in this slide deck. It has something called link server. You can link other SQL server and you can do queries to that SQL server from this SQL server. You can also write code in .NET and attach it to your database engine and do queries and invoke it during in your queries. It's a very, very powerful functionality. This is not available in the Azure SQL cloud native database, but it is available in the MI. ये सारे features are available. R services is not available क्योंकि again remember जो third option है हमारे पास उसके अंदर you do not have anything but the database functionality. This is core database, nothing else. So that's why
when you're building brand new applications, we opt for this one when you're looking for core database functionality. Okay? So understand this one. So when you're using this enhanced functionality, right? When you're using the different features from SQL Server, let me see. When using some of these services, and you need them, then your option for a PaaS service is SQL MI. और ये मेरा ख्याल है ये वाली भी सर्विसेज, ये थोड़ी सी और सर्विसेज हैं उसके अंदर, आई थिंक दे आर ऑलरेडी देयर. ये डेक वाज लिटिल बिट ओल्डर, ये भी शायद आ चुकी हुई हैं इसके अंदर. Okay? But the point is, there are lot of services in SQL Server which do not belong to the core database engine, like these things. Okay? So अगर आपकी application is using those services and functionalities, then SQL MI is what you need. पहले हमारे पास दो ऑप्शन थी सिर्फ, which was SQL Server VM or Azure SQL, the native database engine. So if your native database engine was not didn't work, then you had to go to the SQL VM IaaS option. But now we have the PaaS option as well in SQL, which is SQL MI, managed instance. So again, it is just like regular instance that is running on your on premises, but it has pretty much all the functionalities of that is available in a SQL Server virtual machine. Sure. So again, be very, very clear on this one, okay? Between MI and VM and SQL database. This is very, very critical that we understand what is the motivation, why we use pick which one, and what is the reasoning. So you need to be very clear on this one. Yeah. उसके बाद we also discussed कि Azure ने 3 databases, open source databases को लेके उनकी services they are providing you as a service, which is MySQL, MariaDB and Postgres. और ये मैंने बताया था कि MariaDB जो है it was, as you can see, created by developers of MySQL. Okay. तो MySQL के developers ने MariaDB बनाया, and they have done complete rewrite and done lot of optimization. And what else it does, the very critical part, offers compatibility with Oracle database. Okay. Or understand each thing. ये क्या है? Written by MySQL guys, compatibility with Oracle database. So somebody can say कि मुझे जी low cost option चाहिए for database. Oracle licensing is very expensive. What are your options? We can say we can provide you a service for MariaDB that provides you compatibility with Oracle database. Of course, there are a lot of things in compatibility part, right? How much does it support? What does it support? What it doesn't support? But regardless, right now, if somebody asks you, this is something that you want to investigate, कि क्या MariaDB will be able to help me? So it might be able to help migrating the databases and everything else, right, into this one, if it supports all the constructs. So they had this motivation that people running Oracle database will be able to move in this one. And what Microsoft did, Microsoft took this database and created a PaaS service for this database. Same thing for this, same thing for Postgres. और Postgres का एक जो important feature है, that is this hybrid relational and object database. Okay. Object relational database. Object का मैंने बताया था, you can take your objects, your classes, your object. आपने class car बनाई है या आपने human बनाया है, उसमें whatever class you are creating, right? कार क्लास है, उसके नंबर ऑफ टायर्स, और आपने क्लास बनाई व्हीकल, उसके नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स हैं. तो यू कैन स्टोर दैट ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट इनटू
a Postgres database. That is what an object storage is. Okay. So आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास I need to store this kind and I need object relational database, this is what I need. If I need compatibility with Oracle, I need MariaDB. And if I need, for example, if I'm migrating my LAMP stack, okay, LAMP, what is LAMP? LAMP is an acronym, Linux, Apache, MySQL, and PHP, an application platform or application stack that consists of these four technologies, where OS is Linux, web server is Apache, database is MySQL, and the programming language is PHP. So in the LAMP stack, where M stands for MySQL, you can use Azure Database for MySQL PaaS service. Okay, understand these migration options, understand these development options. So basically, if you have a vendor that says my application is running on LAMP stack, and you go and buy a third-party application running on LAMP stack, आपने Azure के ऊपर deploy करना है. What are the options? Instead of using the MySQL virtual machine, you can use MySQL Azure Database for MySQL PaaS service. Okay. You have a system that is running Oracle, running on Oracle. You want to deploy in Azure. What are the options? You can investigate MariaDB for Oracle compatibility, and we can take a look right now because let's see for a second. We can say MariaDB Oracle compatibility. Okay, let's see what it does. So if you take a look, MySQL, okay. So वो कह रहे जी, if their SQL mode is Oracle, it understands some PL SQL, and over here it understands SQL Server as well, right? That is very, very powerful. And they're giving you this one also, that you can move from SQL Server to MariaDB. So you can see कि हर चीज जो develop होती है, it does certain things. Okay. So you can see it has lots and lots of compatibility. Various different Oracle constructs are supported. So that gives you a very, very nice option to migrate from Oracle to MariaDB, because Oracle is very expensive. तो आपने अगर मूव करना है, यू कैन सी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा Oracle की जो PL SQL है उसकी कंपैटिबिलिटी डाली है. एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ PL SQL. ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि डेटाबेसेस दे सपोर्ट SQL स्टैंडर्ड एंड दे हैव देयर ओन एक्सटेंशंस. और SQL सर्वर के अंदर जो उनकी माइक्रोसॉफ्ट की है, दैट इज़ T-SQL, SQL सर्वर T-SQL. Let me see. So this is a core enhancement over SQL जो Microsoft की Microsoft इस्तेमाल करता है अपने. And you can see also compliance with SQL standard. Of course, it is SQL is a subset of T-SQL, right? So it supports everything in SQL plus enhancements to SQL. These are Microsoft SQL Server specific enhancements. That's called T-SQL. ये Microsoft specific है. इसी तरह Oracle का है PL SQL. You should have this basic knowledge of databases and understand their this is specific to Oracle. So this is Oracle enhancements, PL SQL, and Microsoft is T-SQL. So they have done a lot of enhancements, Microsoft and SQL Server, to provide these kind of enhancements. It's a good thing to go over these ones. In a course, we seem like they have given you a course also, and for these things, right? So it's very critical to have this kind of knowledge in the databases. This is high level. Oracle
PL SQL, Microsoft, T-SQL, MariaDB, compatibility modes with, I mean, it's basically MySQL, but with rewritten, enhanced, and it has compatibility with SQL Server and MySQL, and it has with Oracle and all that. And you can migrate from different databases to this thing as well, to MariaDB, right? So you should understand these things high level, right? Or Postgres database, if you want to store objects directly into the database, you should know that the thing to use is Postgres database. ये आपको पता होना चाहिए वैसे ही what these things are and what not. फिर हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वो दैट वाज नो सीक्वल ग्लोबल स्केल रिलेशनल डेटाबेस. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वन वेरी केयरफुली. इसमें आपको जो डिज़ाइन पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो क्या हैं? डिज़ाइन पॉइंट्स ये हैं कि हमने बताया था ये कि नो सीक्वल डेटाबेस आर 4 टाइप्स. ओके, you should understand this one: documents, graphs, key value, and column family stores. You should know these ones. What are these? What is a document? What is a graph? What is a key value table? What is column family stores? You should know these 4 things. Okay, that's one thing. Second one is जो इसके अंदर critical part था जो हमने पढ़ा था कि एक तो ये है you can do multi-region writes, which means आपने application deploy की हुई है in let's say Europe and USA, या Middle East and Europe and USA, 3 regions, right? You can write to local replica. आपकी जो local copy है of this database, you can write, and it behind the scenes it will synchronize, right? It provides all those services. आपने local replica write कर रहे हो, you don't have to go to a central location. You can write to your own and it will synchronize all these things. This is a very, very powerful functionality. Okay? Very complex and very powerful functionality. But for you guys, for the users and developers, it is an amazing functionality to use. Okay? So, तो नोट तो इसके अंदर अगर आपने अब यहाँ पे you need to think about the design scenarios. ठीक है? As I mentioned, case study भी है और इसके questions भी हैं. You need to be very careful with this one and be very clear on the concepts. इसके अंदर main concepts हैं that you should be clear. ये चारों जो इसके अंदर वो हैं types हैं of NoSQL database. So NoSQL databases, there are 4 types. Okay, you should know these ones and what do they do? What is a graph database? What is a document database? Key value tables and column family. You should be able to explain very, very briefly what those things are. Okay. उसके बाद Cosmos DB की जो critical functionality है multi-region writes. Okay. This is one of the very, very nice functionality. हमने जो database storage के अंदर पढ़ा था उसमें क्या था? That was read access GRS. यानी कि read access second copy के ऊपर read था, write नहीं था. Writing to multiple copies is one of the most complex things. Most complex things. Understand this one. Very, very few technologies allow that. और इसके अंदर they are doing that multi-region writes. जो storage था वो भी नहीं provide कर रहा था वो. Storage was saying I will replicate and you can read from that region, but no writing will happen to the secondary region. Here it is saying yes, you can write to secondary region as well. That means it's doing extremely fast synchronization. Extremely fast synchronization, okay, between the multi-regions. फिर Cosmos DB के अंदर एक और बड़ी critical important functionality थी. That was it had APIs for lot of these things, okay, lot of these databases. अब यहाँ पे जो solution component था, यहाँ पे था, यहाँ पे you could have put Cosmos DB as well. You could have used Cosmos DB. यहाँ पे हमने क्यों ये यूज़ किया था? ये हमने इसमें ले गए थे. खैर इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, राइट? वी डिड नॉट हैव द ऑप्शन क्योंकि हमारे पास जो केस स्टडी थी उसमें उसने कहा था कि यू कैन नॉट यूज़ पैस सर्विस. तो हमने कहा जी विल यूज़ द वर्चुअल मशीन विद पोस्टग्रेस डेटाबेस सर्वर. ठीक है,
we had to do this one because this is what we were required to do. A vendor ने कहा था, software vendor ने कहा था, I will not support. So we didn't have much option. लेकिन यहाँ पे हमारे पास, if we had option for PaaS, understand we can use Cosmos DB for all these scenarios. MongoDB है, NoSQL है, NoSQL के again there are 4 key areas, और उसके अंदर एक था Apache Gremlin which was graph database, right? You should understand the graph theory and basic what is a graph database. Okay, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था graph databases, right? There's a document, graph, key value tables. Key value tables हमने पढ़े थे, क्या हैं? You should know that, right? And key value tables का जो database है, that is Apache Cassandra. और key value tables are, let me see, it is written also over here. You should know this stuff. Key value का मैंने बताया था, every row doesn't need to have all the required columns. और उसके अंदर वो it will give you only those things where it has the value. It will omit other things as they don't belong to it. तो इसके अंदर every row would have different set of values, and it's not a matter of leaving them out. ये भी मैंने बताया था आपको, if you leave them out in a normal database where it is expecting the value, क्या होता है उसमें? वो null value देते हैं आपको उसकी. यहाँ पे there is no null value, वो कहता है ही नहीं, आपकी value ही नहीं है. You are not, this column doesn't belong to you. Okay, understand that difference. और ये था, और ये भी मैंने बताया था, understand the reasoning of this one. Why do you use this one? Why do you want compatibility with Azure table storage? इसमें मैंने आपको बताया था कि Azure table storage is a simple key value pair आपको देता है. But if you grow out of it, it's not a scalability, it's not a very scalable solution, it's a simple solution. But if you're using that one and you want to have enterprise solution with complete monitoring, backup and everything, you should use Cosmos DB. Okay? Understand the motivations, please. इसकी लैब थी, मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर ये there are different things, right? You should know these kind of questions, they are basic ones. बाकी इसमें नथिंग रियली. इसके अंदर मैंने एक दो और चीज़ें बताई थी आपको. इंडेक्स आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो ऑल दिस क्वेश्चंस एनीवे. ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि दिस इज़ फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन. दिस इज़ अगेन आपके डेटाबेस कोर्स में से हैं, मैंने उसके लिए रखी थी जस्ट फॉर सॉर्ट ऑफ रिव्यू. इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, दैट वाज नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन. इसका मैंने आपको बताया था व्हाई डू यू डी नॉर्मलाइज, और डी नॉर्मलाइज किस सिचुएशन के अंदर करते हैं. एंड दैट वाज जो मैंने सर बताया था आपको, दैट इज़ फॉर द डेटा वेयर हाउस सोल्यूशंस. जब डेटा वेयर हाउस सोल्यूशंस के अंदर यू हैव पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एंड यू हैव टू डू क्वेरीज, देन यू हैव टू कट डाउन द नंबर ऑफ जॉइंट्स टू स्पीड अप द क्वेरीज, राइट. सो अगर आपका OLTP डेटाबेस जो है दैट इज़ हाईली नॉर्मलाइज्ड इन दिस सिचुएशन, सो वहाँ पे आप डी नॉर्मलाइज करते हो इन डेटा वेयर हाउस, ताकि at the cost of redundant data, for example like this over here, you don't have to do joins. Okay, you can the queries will be much faster. Your so understand the motivation of this one, normalization versus denormalization, and in what scenarios do you do that. Understand this one. उसके अंदर जो important point था, another one was we discussed all of these ones, but one thing to focus on is Azure Data Factory. Azure Data Factory मैंने आपको बताया था, it is used for ETL or ELT, which is to extract data or extract, load and transform, or extract, transform and load. ETL versus ELT. और उसके अंदर क्या बताया था हमने, क्या क्या differences हैं, right? Why do we do this? Why do we do ETL and why do we do ELT? The motivation was, and you should know this stuff, motivation of ELT against ETL was, जब आप extract करते हो database को and you transform and then you load, तो extraction happens from data sources, transformation happens when you have all the data in the ETL server,
and then you load it into the some destination, which could be the database. That means when you're transforming the data, you're using the power, the compute power of the ETL server, where the ETL code is running. That is not very scalable. क्योंकि कई routines चल रही हैं, उसके अंदर आपकी multiple routines are running for doing ETL. So lot of ETL jobs are running. It will pressure the server a lot, right? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा load आ जाएगा, regardless of the number of cores. Because when you're doing this much heavy processing on huge amount of data, it can kill the server. It can destroy the performance of the server. जबकि when you do ELT क्या करता है? Extract करता है from a data source, load it into the where you need to load it into the database, and then you transform. So when you transform in a database server, that means you're using SQL queries which are highly optimized for your for that database. और आप data warehouse के अंदर कर रहे हैं वो, then it is really fast क्योंकि it is highly scalable. So हमने कहा था कि SQL server के अंदर जो आता है by default ये ETL tool, that is called SSIS. Okay, if you look at it, okay, SSIS, SQL Server Integration Services, is the ETL/ELT tool that comes with it. Okay, so now the native cloud native solution is Azure Data Factory. और उसके अंदर Azure Data Factory, while you can use the native solution, वो कहता है आपकी SSIS jobs हैं ना आपके पास, I can run them as is as well. So you can run them in the cloud and I can scale much better. But you can at least bring them to the cloud as is. So you can do SSIS in Azure Data Factory, or you can do brand new cloud native solution in ADF. ADF के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, that is serverless. You pay by the transaction and it has also compute option. If you go into this one, I'll show you. If I go over here, Azure pricing, आप ये देखो, ठीक है, वो कह रहे हैं या तो आप डेटा पाइपलाइन बनाओ विच इज़ द नेटिव, या आप SSIS मोड में ले जाओ इसको. और अगर SSIS मोड में आप लेके जा रहे हो इसको, तो यू कैन यूज़ द कंप्यूट. ओके, यू कैन यूज़ द कंप्यूट ऑप्शन, क्योंकि SSIS जॉब इज रिटन ऑलरेडी. आप उसको स्ट्रेट क्लाउड में लेके आ रहे हो, यू कैन गेट द इंस्टेंस, यू कैन गेट द VM that it needs to run on. So as is migration to the cloud, you can use ADF with SSIS mode. This is what it's talking about actually, this one. Okay, SSIS and ADF. So when you do this one, this is no longer serverless. This is a pure compute based. When you go into this one, data pipeline, that means now you're rewriting as a cloud native. Now you will see, okay, let's see, and you can see the writes, and you can see, let me see, activities, right? This is serverless. Sorry, too much. It's already in thousands. Maybe 100,000 activities, and it charges you per activity some cents, so it's $150, right? Data movement activity is a little bit higher, pipeline activity is a little bit less, and all that, right? This is a serverless mode. It's not charging you for the compute. Data flow is something else. I don't want to go into that one. Okay, what is data flow right now? So you can see activity runs. It shows you the serverless. You're not paying for the compute. You're paying per activity. Okay. So this is a serverless mode in ADF. Let me see if it provides you a compute option as well. Let me see. No, it does not. Okay, so it's all serverless.
So ADF is by default serverless, and you pay by the activities, by the number of activities being run, and all those things, right? And for the migration options, it provides you SSIS mode. आप अपनी जो पूरी pipeline and data pipeline are written in SSIS on premises, you can bring it over here. It assigns the compute, and then you can just load that job जो आपकी file है यहाँ पे for SSIS, and it will execute this in the cloud with the compute in the backend. ठीक है? But again, for our purposes, understand what Data Factory is. It is essentially an ETL/ELT tool, right? It's just the mode that you run it in, whether it's whatever it is. But this is what it is. Okay. Rest, no need to worry about it. अपने लिए पढ़ लेना आप, no need to worry about it. Here, the data stores are critical, and this one is critical. Rest of it, do it for your own purposes. Okay. इसके अंदर हमने ये भी बताया था फॉर हमने एक और चीज़ बताई थी फॉर द डेटा वेयर हाउसेज, राइट? लेट मी सी. आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस आर फेयर गेम. ओके, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आई कुड आस्क एनीथिंग, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बट अंडरस्टैंड. और हमने ये बताया था कि डेटा वेयर हाउस जो है दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर रीड ऑपरेशन. ओके, अंडरस्टैंड दिस वन वेरी क्लियर, बिकॉज जनरली हमने कहा था राइटिंग जो है इट इज डन थ्रू ETL/ELT. देयर इज ओनली द टाइम वेयर द डेटा मूवमेंट हैपन्स, डेटा इज रिटन. Otherwise, it's meant for reading the data through jobs, through queries, and through reports and all that, right? This is what data warehouse is used for, and it's also called decision support systems. इसके अंदर आप analysis करते हो and you do various different things. Okay. Nothing special about over here. ठीक है. So this was a database. Okay, ये हमारा नया था. We have not looked at too much in this one. इसके अंदर मैंने आपको 5-6 सवाल दिए थे last time. Make sure you understand those questions. I can ask very similar questions जो मैंने आपको last time वो document मैंने post किया हुआ उसके अंदर दिए थे. Then the second option, second thing was हमारा जो session है, it is this one. Okay, app service plans. App service plans. Okay, so एक second. तो हमारे जो sessions थे, that was data services, SQL MI. Let me look at the SQL MI one more time if I missed something over here. So understand these are extra features beside the database engine. When we say near 100, जब हम कहते हैं उसको कि SQL server जो Azure SQL है, cloud native database है, it doesn't contain any of these services. Okay, these are additional services in SQL server beside the database engine. Azure SQL के अंदर जो cloud native database है, it contains only the database engine. It doesn't contain any of that. Then comes SQL MI, which is also PaaS service. It contains all of this stuff, right? So that's why I say it has near 100% compatibility with on-premise SQL. And last but not least is a SQL VM, which is exactly same as what you're using on premises. Or again, यहाँ पे anyway, we'll leave this out. So this was the 2-3 things that you should be very, very clear about. यहाँ पे हमने app services, I think we have covered lot of stuff. From the case study perspective, understand certain things. यहाँ पे कि when we're dealing with different app service plans, you should be able to clarify, have a clear picture in your mind, right? यहाँ पे आपको बेसिक से ला के प्रीमियम तक आपको कंप्यूट जो है डेडिकेट होता है, और आइसोलेट के अंदर आपका VM वर्चुअल नेटवर्क भी डेडिकेटेड होता है. दैट मीन्स यू कैन यूज योर ओन VNet टू पुट दिस वन इन. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस वन कि आप यू वांट टू डिप्लॉय दिस इन अ कंप्लीटली आइसोलेटेड मोड, you need to use the isolated one.
compute is already dedicated just like in the other plans as well. Okay. And another thing is हमने deployment slots का पढ़ा था. Understand one very simple thing, which is कि हमने पढ़ा था we can use for rollbacks, we can use for whatever things, right? But if you look at it high level, it can be used for anything, right? मैं कहता हूँ जी I have certain changes, customer कहता है the business team is working with development team, वो कहते हैं जी हमें ये enhancements दिखाओ, we want to look at them and play with them. I can use a slot and I can deploy with enhancements XYZ. वो कहते हैं जी हमें ये functionality change करके दिखाओ. I can build those things, I can change the code, and I can deploy that in a deployment slot again to show them. So to do testing and to close small testing with a small group of people, I can deploy that in a slot, right? So customer and the business users can play with it functionality and see how does it look for like a beta testing or user testing and see how does these things look like. Okay, so understand those things. Okay, I can use the slots for many anytime I need to deploy some version for whatever reason I can use slots, right? That's the bottom line. Understand this important point. Sure जी. बाकी हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है. I don't want to rehash. There will be some other things to worry about, but these are the main points. Also certificates, right? हमने कहा था दो टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स हमने पढ़े थे, और वो सर्टिफिकेट थे हमने या तो वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट था या हमारा डोमेन स्पेसिफिक डोमेन का सर्टिफिकेट था. और उसमें मैंने बताया था कि वाइल्ड कार्ड सपोर्ट्स all the URLs underneath it. I can say nu.pk, it'll support fast.nu.pk, it'll support lhr.fast.nu.pk, and so on and so forth, right? So it's one certificate, it's more expensive, but it supports all the subdomains, whereas you can get specific certificate for a subdomain as well. For example, I can say I need a certificate for lhr.fast.nu.pk. It will not work for anything else. It will work only for that thing, right? So if you're doing that one, understand it's a much cheaper certificate than a wildcard certificate. But again, the application जो है उसकी, that is very limited also. It works only with a single domain. So if you're okay with that one, it works out fine. So ये हमारे दो सर्टिफिकेट टाइप थे बेसिकली, स्टैंडर्ड और वाइल्ड कार्ड बेसिकली. यहाँ पे लेट मी जस्ट सी. हाँ, ये वाला अगेन ये मैंने उसके अंदर भी बताया था अपने केस स्टडी के सोल्यूशन के अंदर. जब भी हम डिप्लॉय करते हैं, जब भी ऐप सर्विस प्लान बनाते हैं, it is either code and code based. If you're picking code, then you must pick the solution stack. Let me just show you this one as well, okay? Again, be very clear on this part as well. तो अगर मैं कोड कहता हूं तो सबसे पहले आस्क फॉर आपका स्टैक कौन सा है, क्योंकि मैंने दिखाया था उसके अंदर भी अगर मैं स्टैक कहूँगा .NET फ्रेमवर्क 4.8, and as you know we have discussed in the class, it works only on Windows, right? .NET framework 4.8, 4.7, 4.6, whatever it is, it works only on let me just see. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐप सर्विसेज, right? If I create app service,
मैं ऐप सर्विस में जाता हूँ. Then what I'll do is I'll create, ये सारा मैंने रिकॉर्ड कराया था, उसके अंदर भी जो केस स्टडी का मैंने सोल्यूशन बताया था. ठीक है, जब आप कोड जाते हो तो फर्स्ट थिंग इट आस्क्स यू, एंड थिंक लॉजिकली, राइट, थिंक लॉजिकली. कोड है तो पूछेगा रन टाइम स्टैक क्या है आपका. And if you go with ASP.NET 4.8, 3.5, these versions, automatically it must be Windows only. Okay, Linux is grayed out. You don't have that option. अगर आप इसमें कहते हो .NET 7, this is .NET 7, this is .NET Core. You have both options. It runs on Linux and Windows. Okay, understand this one. और जो Docker container है, it doesn't care about the stack. Why? Because it is contained within the image. You don't have to worry about any kind of dependencies. So all you care is for the container, it is either Linux or Windows. You must provide the operating system for container. क्योंकि मैंने बताया था ये जो है यहाँ पे Docker, let me see if Docker is running over here. मैं आपको दिखा दूँ just again. So container runtime है, and runtime requires is specific for the specific operating system. और यहाँ पे let's see if it comes up. It's starting up. क्या है? Image and identical machines. मुझे सवाल की समझ नहीं आई. हाँ, अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ. मैं इसका ज़रा बता दूँ. तो इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पे डॉकर, इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पे कह रहे हैं स्विच टू विंडोज़ कंटेनर्स. तो ये अब ये लिनक्स कंटेनर्स है, और लिनक्स किसके ऊपर चल रहे हैं? WSL के ऊपर. नो नीड टू नो अबाउट द डिटेल्स, बट इट कैन रन, क्योंकि लिनक्स रन्स नेटिवली ऑन विंडोज़, सो इट इज़ डूइंग. बट अगेन द पॉइंट इज़, it is right now using the Linux runtime, and it is telling you you can switch to Windows containers as well. So it is operating system specific. यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ. तो again, अगर कोड है तो कोड must contain the, क्या कहते हैं आपका, runtime stack and the operating system. And if it's Docker container, then all the dependency are in the image already. Then all it requires is Linux or Windows, the operating system. और ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि it is specific, जो आपकी रन टाइम है, it is running for specific operating system. ठीक है. तो this is the important part to understand. ठीक है, जब कोड करते हो आपको रन टाइम स्टैक नीड्स टू बी देयर सिलेक्टेड एज वेल, और बेस्ड ऑन दैट यू क्रिएट, जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट आपका ऐप सर्विस प्लान बनता है. उसको पहले बना लो या बाद में बना लो, डजंट रियली मैटर. ऐप सर्विस प्लान इज द कंप्यूट which you can reuse as long as your region is same and operating system is same. You can reuse the app service plan, okay, which is your compute. ये हमने क्लास में कई दफ़ा we discussed this part. You should know the custom domains. ये मैंने पूछा था क्विज के अंदर भी. Lot of people got it wrong. Understand how do we do custom domains. I need to add custom domain. How will I do that? Okay. क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे? And please do not do these kind of things. Okay. I will now give 0. Somebody says ensure this thing, or we will verify this thing. Please, I will remove all the marks this time. Okay. किसी ने अगर ये लिखा कि we will ensure first this one or change this and all that, if there's a conflict in the problem statement telling that change this or change that, you will not get any marks. Provide the solution to the question asked. If it's not possible, mention that. Okay.
डू नॉट कॉपी पेस्ट थिंग्स लाइक दिस, जिस तरह लास्ट टाइम सारों ने किया था और बहुत लोगों ने किया था कि इंश्योर ऐप सर्विस सपोर्ट्स दिस. नो, आई एम गिविंग यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर दैट वन. Okay, how you will do that? जी. I mean, don't ask me that, right? I'm just telling you. If I have given you before, expect anything, right? The point is, if question is not valid, it is to check your understanding, right? Whether it's valid, you should understand the concepts. A lot of people try to change the question. Okay, ये question hai, we will change it to this one. Don't change it. You will not get marks. Provide the answer. If it's not doable, provide the reasoning that it's not doable, right? इसके अंदर that's pretty much it. I don't have anything more. ये the चार पांच चीजें are important points in this one, okay? अच्छा. इसमें then we had the storage services. Let me just open the storage services part. अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू केस स्टेटमेंट्स, राइट? हमने व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वंस, राइट, अब मैं आपको कहूँ कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए फॉर अ डेटा सेंटर फेलियर. I mean, you can say ZRS, you can say GRS, you can say GZRS also, right? All these support the requirement that if the data center fails, any of these solutions will work fine. But if I say I need to be able to handle data center failure and I want the cheapest possible solution, then you have very limited options, right? Only one option is correct, the cheapest possible solution, which is what? Which is ZRS, right? The cheapest solution is ZRS. जितनी कम से कम कॉपीज बनेंगी आपकी और जितनी क्लोजेस्ट कॉपीज बनेंगी आपको, दैट इज द चीपेस्ट सोल्यूशन. सो LRS is the cheapest for our requirement. When I say I want data center failure in a cheapest possible way, then ZRS, because it is data sitting still in the same region. It just happens to be the 3 copies that I'm making, they are sitting on 3 different data centers, right? GRS is more expensive. Why? Because it is being copied into the other zone. आपकी 3 copies यहाँ बन रही हैं, 3 copies वहाँ बन रही हैं in a different zone. Then GZRS. तो GZRS is आपकी 3 copies यहाँ पे zones के अंदर बन रही हैं और वहाँ पे according to LRS methodology आपकी वहाँ पे बन रही हैं. ठीक है? उसके बाद so think about these things, right? I can ask you these kind of things कि आपने, now these are conceptual question. When you have to provide certain thing, you have to do make sure you can survive a data center failure, but pick the best possible option from cost perspective. Think about those things. Okay? I can also say कि आपने एक region के अंदर हो, okay? और आपने उसकी availability को optimize करना है. अब आप एक रीजन के अंदर हो, मैंने आपको कन्फाइन कर दिया ऑलरेडी, आप रीजन के अंदर हो और ऑप्टिमाइज करनी है अपने उसकी अवेलेबिलिटी. व्हाट डज दैट मीन? आई वांट द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबिलिटी. अब आपको जो मैंने कन्फाइन कर दिया रीजन के अंदर और आपने उसकी ऑप्टिमाइज करनी अवेलेबिलिटी, हाउ कैन यू डू दैट? दैट मीन्स ओनली ऑप्शन यू हैव इज दैट यू गो इनटू ZRS मोड. ठीक है? अगेन, these are conceptual questions. Understand what is being asked. ठीक है? तो आपने उसके अंदर ये देखना है कि it needs to be highly available, but आपको constraint है, you are sitting in a single region. Then what is the best way? ZRS. You cannot do GRS or GZRS because you have a constraint. A customer ki, because of various regulations, you need to be in a single region. Okay?
for whatever reason. So think about these things, pay a little bit attention to these kind of questions, what is being asked. ठीक है? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर आपकी केस स्टडी के अंदर, जिसमें it was a practical implementation of blob versus Azure files, and lot of people struggled with that one. But just because I have PDF files or I have documents doesn't mean I'll go with Azure files. I am not sharing. Azure files is there. It provides highly available network file share. Understand, इसी key जो चीज़ है, that is network file share. It uses SMB protocol, right? So you can map these drives, you can share these drives, you can share these files. Otherwise, अगर SMB ना हो, this looks very much like blob. I can drop everything over here as well. I can copy everything, all my files in Azure files as well, what I'm doing in container, and vice versa. But आपने ये देखना है मेरी फंक्शनैलिटी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैं रिक्वायर कर रहा हूँ. तो बी वेरी क्लियर ऑन दैट वन कि मेरा यूजेज है, इज इट फ्रॉम एप्लीकेशन परस्पेक्टिव. ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसके अंदर, आपके सोल्यूशन के अंदर. इफ़ यू गो बैक ओवर हियर, इफ़ यू गो बैक इनटू दिस वन, यहाँ पे ये मैंने स्टोरेज जो है, इवन दो इट वाज पीडीएफ फाइल्स, बिसाइड ऑडियो वीडियो, पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स, दे आर आल्सो इन द सेम स्टोरेज. क्यों? बिकॉज एप्लीकेशन इज रीडिंग एंड राइटिंग. I don't need to share. I can dump everything into the same storage. ठीक है? तो think about those kind of things. Think about क्या करना है. Again, you need to be clear in your concepts, what you are doing. Okay? It's not about सबसे बेहतर. It's about if you want to share. अगर मैंने 10 बंदों के दरमियान फाइलें शेयर करनी है, आई कैनॉट डू दैट विद कंटेनर, आई कैनॉट डू दैट विद अ ब्लॉब, राइट? आई कैनॉट. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसके अंदर एसएमबी प्रोटोकॉल नहीं है, सो इट विल नॉट अलाउ शेयरिंग. ठीक है? सो इट्स नॉट अबाउट सबसे अच्छा, इट्स अबाउट व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स. अगर मैं कहता हूं मैंने मुझे स्टोरेज चाहिए, I have all these office documents which application will be reading and writing. आप upload कर रहे हो, download कर रहे हो. I don't need Azure files क्योंकि मैं sharing नहीं कर रहा. I just need a storage. I can use blob storage. I don't need SMB protocol. I just need application to be able to access, right? That's all I need. So be very clear on the concepts, right? If I need this functionality, if this is what is required, you will pick this one. Right? Otherwise, you can pick this one, and it is telling you it's such as text or binary data. I can put Office documents, right? But if I don't need file share, I don't need to do this one. So understand, again, always go back to concepts. There is no need to memorize anything. Concept needs to be very clear. Why I am using this one? Why I am using, जिस तरह SQL Server की मैंने को बताई थी. Why I am using this one? Understand the concepts, understand the motivation. These are the design points, right? When you're designing, there is no memorization, right? You need to think about motivation. You need to think about customer को क्या चीज़ चाहिए and what I can use with the minimal possible cost, with the best possible solution, right? What are the minimum services I need for this solution? Think about those kind of things, right? And for that, you need to be good in your concepts. You need to be comfortable with the concepts. दैट्स वाई जो मैं बार बार चीज़ें पूछी हैं. मैंने एज़्योर फाइल्स का पूछा था, मैंने उसके ब्लॉब स्टोरेज का पूछा था, मैंने क्विज ने पूछा था, मैंने उसमें पूछा था. बट अगेन लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल फ्रॉम द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन द केस स्टडी, राइट? सो अंडरस्टैंड उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इन चीज़ों की. लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज़ जो पीपल स्ट्रगल्ड ऑल्सो वॉज एज़्योर B2B and B2C. Let me just clarify those points again, okay?
Okay. ये माइक्रोसॉफ्ट पे किसी ने दिया हुआ है. So B2B ये है कि एजर एडी कि आपने उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथेंटिकेट करने दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एंड हाउ दैट हैपन्स, उनका एजर एडी की आइडेंटिटी है, यू ब्रिंग दैम इनटू योर एजर एडी और कहते हो जी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ. When he authenticates, he can log into your machines, he can log into and do various different work as your own employee, right? This is B2B. कि आप business to business, you are able to, you can give access to your systems to somebody else in some other organization. This is B2B. Okay. आप group manage कर लो, just like you're managing your own employees. B2C में, you're not giving them access to your system. You're giving access to applications. Yeah. Directly by the application, right? So the idea is this कि आप कहते हो जिस तरह B2C अब कंज्यूमर है, आपकी आइडेंटिटीज हैं गूगल की, विंडोज लाइव की, outlook.com and whatever, and then you say you can come and register in my application and use your external identity and I can give access to your system. This is B2C. Okay, business to consumer. You can bring your own identity from whatever system and I'll give access to my application only to for you to use the application. आप जाते हो फॉर एग्जाम्पल ऑन डिफरेंट वेबसाइट, इनमें से यू कैन लॉग इन विद योर ट्विटर अकाउंट और यू कैन लॉग इन विद योर फेसबुक अकाउंट और जीमेल अकाउंट और वॉट एवर, राइट? What is that? That is business to consumer. It just happens to be when you talk about Azure AD B2C, that is Azure AD is doing the authentication for the application and it is allowing you to use your other identity. Okay. So if I look at it over here, let me see. I want to show the picture also. ठीक है, ये है B2C. आपकी different applications हैं. You can bring in your own identities and be able to use the system. Log in कर लो and use the system. Okay. So this is using the system, using an application, और उसमें क्या है? Using the internal systems, internal applications, internal all the resources. You can log in as an employee in B2B. ठीक है? So that is the main difference. तो इन्होंने it's a service built from anyway, I don't want to go into the details. सही है? तो क्या कह रहे हैं? Any business or individuals who wish to authenticate end user to their application, okay? अगर आपने एक्सेस देनी है अपनी एप्लीकेशन को, you will use Azure AD B2C. Okay? Understand this part. And B2B, let me see if I can pull the official documentation for B2B as well. External partners B2B. सही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दोनों चीजें. तो they call it external identities. The main चीज है कि आप उनकी आइडेंटिटीज लाके अपने सिस्टम में डाल लेते हो, कहते हो यू कैन एक्सेस माई सिस्टम्स एज वेल जस्ट लाइक माई ओन एम्प्लॉयज. तो ये मैंने इसका बताया था जो मैंने मार्केटिंग कंपनी की एग्जांपल दी थी, राइट? एंड इफ यू लुक एट इट, आई विल शो यू दैट वन एज वेल. इफ आई गो बैक ओवर हियर, this is the external, this is B2B. I can come over here and I can say, let me see if I can add users. Actually, I can add it over here. Anyway, ये मैं आपको दिखाता हूँ how to add. I can go into users and I can say invite. This is the B2B setup. Okay, new users and I can say invite. And I can say my whatever, my Outlook account. Okay.
दिस इज द B2B सिचुएशन. मैं Azure Active Directory के अंदर I'm adding an external identity. ठीक है, and I will get this email. Let me make sure. Anyway, I'll get this. Sorry, ये तो मेरा different account है. From ये मेरी invitation आई हुई, ठीक है. You can see I'm invited now. This is B2B, okay, and I can go there and I can log in with this account, and I'll be given access into Microsoft Active Directory, and I can act as an employee, and of course based on the permissions and my groups and all that, and I can access their systems using this one, right? Then switch browsers. So मेरी different profile है, and it's going to log in with my personal account, but I'll be logged into Microsoft systems now as a B2B, and you can see that it is saying that it is requesting certain permissions, is adding me, and you can see it's giving me to Microsoft non-production ये नाम Active Directory का, ठीक है, is giving me access to Microsoft non-production systems, the Active Directory. तो अभी apps नहीं है, based on various different things. I could have given access. अगर मुझे वो डाला होता उसके अंदर, I could have got access to many different things, right? It's a very, very common scenario in a B2B that you do these kind of things, right? You invite people from different identities and allow them to access your different systems based on authentication. This is B2B and B2C. So, for example, if university, a lot of universities, what they do is they say bring your own identity. और आप अपना रजिस्टर कर ले तो यूनिवर्सिटी के साथ यूज़र आईडी, अपना ईमेल, and based on that email they will let you log in into university systems, right? Whether it's Gmail or whatever, and so on and so forth. I think that's pretty much it. और ज़्यादा कुछ नहीं है. Just focus on this one and go over the case study. Make sure you go over it completely, thoroughly, and you should be fine. जो कुछ हमने किया हुआ है, I'll pretty much cover. I think the main चीज़ है इसके अंदर, that is the data services, right? Make sure you cover that one properly. उसके अंदर हमने क्विज भी नहीं की थी. Really wanted कि हम एक क्विज कर लेते उसके अंदर, but didn't get a chance. Actually वो काफ़ी रिवीजन हो जाती है हमारी उसकी. तो उसके अंदर मैंने जो yeah, no promises. I don't think I will have time. मैं अभी फाइनल, I'm finishing the final. उसके अंदर भी मुझे टाइम लगेगा. और आपका कब है एग्जाम? So let me see how much time we have. 1 2 3 दिन है आपके पास, अभी थर्सडे को है, ठीक है. I will try. मैं आपको एक क्विज दे के ना, I will try to do it maybe by tomorrow, कि मैं आपको ये दे दूँ इसकी, okay? Because that will be absolutely very, very critical for you guys to understand. इसका मैं वो देख जी. हाँ, ओवरऑल अगेन हमने बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है उसके अंदर. एक चीज़ दैट आई वांट टू रियली वांट यू गाइस टू कवर उसके अंदर, गुड क्वेश्चन, सॉरी, मैं एक चीज़ मैंने कवर करनी थी उसमें. हमने, आई मीन वी हैव कवर्ड क्वाइट अ बिट ऑफ स्टफ, सही है. अपनी क्विजेज और एग्जाम्स के ऊपर जस्ट फोकस ऑन दैट. वी हैव प्रीटी मच कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. एक चीज़ जो, लेट मी जस्ट ओपन दैट क्विज, ओके, जो मैंने लास्ट क्विज दी थी, which lot of people made mistake, जो मैंने actually section A के अंदर ना मैंने वो hint दी थी actually, because too many people made mistake on that one. ठीक है, इसके अंदर मैंने ये बताया था, ये वाला जो था, ये मैं इसका वैसे solution भी लिख दूंगा. Understand, ये मैंने बताया था
कि इनकी बाउंड्रीज क्या हैं. यू शुड अंडरस्टैंड बाउंड्रीज. और मैंने बताया था कि लेट मी जस्ट ओपन नोट पैड. मैंने ये बताया था कि अगर मेरा /27 है, दिस इज हाउ मैनी एड्रेसेस, दिस इज 32. अब /27 must start from boundary of 32, which is /0 /32 /64, sorry, 64/92. यानी कि अगर मैं /27 बना रहा हूँ, सो आई हैव, ये क्या मतलब है इसका, जैसे 10.10.0.0 होगा. ठीक है. तो 27 की जो बाउंड्री है, इट विल बी एट द ऑलवेज एट द 32. यानी कि इट मस्ट बी 32. ठीक है. It must be multiple of 32. Understand this basic thing. तो यहाँ पे मैं 0 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64, 92, 128. What is that? 128, 164, 192, and then what is it? 224, and then that's the last one. So it's always the multiple of 32 when you're saying 27. Okay? Because there are 32 addresses, so it must be multiple of 32. I cannot say this. For example, I cannot say 0 and 48. I cannot just start from anywhere. Okay? This is very important thing. You cannot start from anywhere. You must be at the multiple of that number. ठीक है? So you cannot start from over here. इसी तरह अगर मेरे पास हो, for example, 10.10.0.0/26. 26 is how many addresses? 64. That means now the next one will be multiple of this. 0 dot, I can go 0, 64, 128, 192. क्योंकि 255 के अंदर, 256 के अंदर I can have only 4 segments of 64, right? Because 64 times 4 is 256. So that I can have only 4 segments. So they will be the multiple of 64. 0, 64, और क्या होगा, 64, 128, 192. ये मेरी 4 सेगमेंट्स बनेंगी. ठीक है. अगर मैं 0 कर रहा हूँ, इसको मैं स्लैश वो कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं ना कॉमा करता हूँ, सब यू कैन सी. अगर ये /26 है, इसी तरह /25 अगर मेरे पास, व्हाट इज 5, कितने एड्रेसेस हैं 5 में, इसमें 128 है. सही है. तो मेरे पास क्या ऑप्शन होंगी, अगेन इसमें से 2 निकल जाएंगे, इट बी 0 और 128. सही है. और इसी तरह अगर मेरे पास 24 है, तो देन आई विल हैव ओनली 1, राइट. मेरे पास और ऑप्शन ही नहीं होनी यहाँ पे, बिकॉज इट विल कवर ऑल 255 एड्रेसेस. सही है. तो इसमें यहाँ पे मेरे पास एक ही है, आई कैनॉट डिवाइड. यहाँ पे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, यहाँ पे 8 हो गई हैं. और जैसे ऊपर जा रहा है 2 की पावर से 1, 2 की पावर ऐड, उतनी सेगमेंट्स मुझे और मिलती जा रही हैं. ठीक है. दिस इज 2 raised to power 0. This is 2 raised to power 1. Number of segments, right? Number of segments. Number of, or I'm not even, I can number of subnets instead of saying subnet, so it's clear.
मैं कितने सबनेट बना सकता हूँ उसके अंदर, राइट? मैं आपको डाल, ये क्विज के सोल्यूशन में ना मैं आपको डाल दूंगा इसको, ठीक है? ये क्विज का ये दिस क्वेश्चन वाज ये वो दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली दिस वन। इसमें मैंने दो चीज़ें पूछी थी और इसमें मैंने ये देखा था कि कुछ इसमें डिड यू गाइस डू दिस और नॉट। लेकिन ये मैंने ओरिजिनल कवर किया था, मैंने इसको रिव्यू में नहीं कवर किया, रिव्यू लेक्चर में, सो आई डिडंट बॉदर टू मच। A lot of people then made mistakes in this one, so that's why I said I will not count this quiz. ये मैंने ये वाला point मैंने again I did not revise, but this is a very critical point. ये मैं इसके अंदर I will put this solution over here, ठीक है? कि मैं पोस्ट कर दूंगा कल तक इंशाल्लाह इसको भी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, नेटवर्किंग के। ओवरलैपिंग वो देखनी है आपने, और अपने देखना सेगमेंट इज एट द राइट बॉर्डर, अपनी सेगमेंट की बाउंड्री के ऊपर है कि नहीं है। ये दो चीज़ें आपने करनी जब भी आप आईपी एड्रेस या सबनेट को देखोगे। अब एज्योर के अंदर वो क्या करता है, इट डजंट लेट यू डू दैट, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट लेटिंग यू डू दैट। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ इसके अंदर, राइट, इफ आई गो ओवर हियर and I go into Azure and virtual networks, यहाँ मेरी एड्रेस स्पेस कितनी है, यहाँ मेरी पूरी 65536, मैंने उसी का एक सबनेट बना लिया हुआ, राइट? दिस इज अ फ्लैट एड्रेस स्पेस, और ये मेरी फ्लैट एड्रेस स्पेस है। I can modify this one. Let me see if I can go into default and I can say 24. अगर मैंने यूज नहीं किया हुआ ना तो इट विल लेट मी डू दिस वन, बट नाउ अगर मैं इसको कहूँ, अगर मैं सबनेट बनाऊँ एक और, व्हाट वी आर जस्ट डिस्कसिंग, राइट, अगर मैं कहूँ SNET 1 और यहाँ मैं आपको कहूँ 10.0.0.024 है, राइट, 10.0.024, वो कह रहा है ओवरलैप कर रहा है डिफ़ॉल्ट के साथ, उसका सेम एड्रेस है। सर ओके, मैं कहता हूँ 1, अब दिस इज़ फाइन, क्यों? क्योंकि दिस इज गोइंग फ्रॉम 10.0.1.0 to 255, दिस इज़ फाइन, बट let me pick something small. I will pick 25. Now 25 has 128 addresses, right? 125, 128. I will either start from 0 or I'll either start from 128. It is happy. I cannot say ji start from 100. It will not. It is that I don't like this one. आप 0 करो या 128, it will not let you do that. You should understand this. What is the problem? ठीक है? And that was this problem जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि it must be at the boundary of its multiple. यही चीज अगर मैं इसमें 26 में ले आऊं, 26 इज क्या है, 64, 0 it's happy, 64 it's happy, 128 it's fine, 192 it is happy, but I cannot say 182, again it will complain, and this is again the same issue. ठीक है, 8 must be at the multiple of its at the boundary of its multiple, and so on and so forth, right? इसे में 27 है तो 0 always and then 32, ठीक है, it's happy, 64 it's happy. I cannot put 48. It is not the multiple of 32. It will not like it. Okay. So जितने उसमें addresses हैं, it must be the multiple of that one. I think the last one is 224. Sorry, 224 है मेरा ख्याल है. 224 है आखिर, like because it will go from 224 to 255. ठीक है, वो जा रहा है, ये आपको दिखा रहा है नीचे. But the point is you should understand, and I see lot of people struggle with these things.
even in practical environments, what to put over here when they're playing with numbers. So you should understand जो उसकी boundary है, जो उसकी total limit है उस range की 27 की 32 है, you should be always at the boundary of that one. अब जो मर्जी करें within the 255 addresses, you are sitting at the always at the boundary of that. Okay, so that is the important point. That's pretty much all. ये मैं आपको क्विज 4 का सोल्यूशन भी डाल दूंगा कल तक होपफुली. और again go over the case study again and again. Okay, I cannot emphasize enough. Let me say अगर मैंने और कोई इसके अंदर वो करना है, एक चीज़ जो happens also, हमने मिडिल टीयर का पढ़ा था कि उसके अंदर जो हमने क्लास में केस स्टडी की थी, और मिडिल टीयर हमने क्या था कि वो अपना कुछ फंक्शनैलिटी थी उसकी अपनी. अब इफ़ यू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स, अब फेसबुक या ट्विटर या चीज़ें हैं, यू अंडरस्टैंड ये आपको स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. And the amount of people on this platform, if it starts going to the database, it can be catastrophic. It cannot handle that much load. So what happens is, it has caching services in the middle tier, something like that. And there are many good platforms that provide you those caching services. Okay, but we are not concerned. The idea is, the middle tier is providing some sort of caching services, so that front end can talk to the middle tier and get that information right away without querying database. Okay, and then once it is done, it can query and update the database based on the accumulated data. Right, it does certain things, very sophisticated architectures of these things when you're designing such applications, right, that require huge amount of user interaction, huge amount of statistics to be calculated and reported to the user right away, and all those things, right? So there's something must be done in the code in the middle without going to the network and to the database and doing all those expensive queries and updates and all that, and aggregations and counts and all that, right? And then asynchronously, it at some point it updates the database, right? It updates the database asynchronously or some way through queues or something, right? So uske andar, when you're dealing with such kind of services, uske andar then you need lot of RAM. You are storing all the data, you're doing calculations, you need lot of RAM to handle all the data in the storage. क्योंकि आपने essentially सारा का सारा कुछ आप RAM के अंदर कर रहे हो. तो उसके लिए you need to think about, अगर मैं आपको solution देता हूँ इस तरह का, where is doing these kind of things, अगर आपने उसके लिए middle tier के लिए app service plan pick करना है, make sure you pick accordingly, right? उसकी scalability, उसका app service plan and all those things, right? Think how you're going to scale. जो मैंने बताया था उसके case study के अंदर भी, हमने उसके app service plans we pick differently, हमने solutions for the middle tier we pick differently, right? Think about those things. हमने जो उसका किया था केस स्टडी के अंदर, उसने जो पॉसिबल सोल्यूशन बताया था, उसने एजर फंक्शंस का बताया था, राइट? क्योंकि लॉन्ग टर्म वो थी उसकी ट्रांजैक्शन, एंड इट वाज causing lot of problems to use Azure functions. They are serverless, they can take whatever time. Microsoft can give, the underlying platform give whatever number of compute nodes it needs and all those things. You can hold the thread and all that, right? So हमने Azure function use कर लिए थे कि requests are not coming that much, but they're taking very long time. ठीक है, तो उसके लिए हमने we picked up that solution. So again, make sure you understand the concepts. Make sure you're able to take the requirements and be able to articulate the solution in a legitimate and in a very logical way. कि ये आपने दिया, this is we are picking because of this. The reasoning must be very clear. ठीक है, be very clear on that one. What else is there? That's pretty much it. I've tried to give you pretty much what we have done, what we have covered and all those things. तो मैंने आपको दो चीज़ें देनी है. मैंने आपको quiz 4 का solution देना है, and I will give you a quiz on the data services, and I will provide a solution, okay, on that one.
So go over that one. I'll try to do both of these things by tomorrow, or at least one by tomorrow and the next one by day after. Yeah, we have 3-4 दिन है. I'll try to give you those things. हाँ नहीं यार मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस दे रहा हूँ सिर्फ. अब ग्रेड तो कुछ नहीं ना, और अब तो एग्जाम में बताता हूँ. इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. अगर ग्रेड करवानी है मुझे बता देना, मैं ग्रेड कर दूंगा. But no, nothing no more graded. It is just to help you with the possible kind of questions. ठीक है? मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा. Expect something similar in the exam. ठीक है? वो मैं क्विज दे दूंगा जस्ट ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको. That's the whole idea. ठीक है? और एनीथिंग एल्स अगर क्वेश्चन हुआ बता देना मुझे. आई विल पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग शॉर्टली. पे अटेंशन टू डेटा सर्विसेज एंड अगेन it's not too much. We have covered, we have gone over, we have done lot of stuff. You should be fine. Maybe कोई ज़हन में आया मेरी चीज़ कोई और हुए, post the questions, I'll try to explain also. But just go over these recordings, you should be fine inshallah. और इसका केस स्टडी आई विल बी अगेन, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी फुल मार्क्स दिए हैं इसके अंदर, आई विल बी रिलैक्स्ड. ओके, क्योंकि कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पीपल थिंक डिफरेंटली. आई विल बी रिलैक्स्ड इन द मार्किंग ऑफ द केस स्टडी इन द फाइनल. 50% इज 50 पॉइंट्स, पर आई विल बी रिलैक्स्ड. ओके, और कई पॉइंट्स मैंने स्ट्रेट आपकी केस स्टडीज़ में से लिए हैं. जस्ट लाइक हमने इन क्लास असाइनमेंट की थी उसके भी कई पॉइंट्स मैंने लिए थे. बट सिंस न्यू थिंग आई विल गिव यू रिलैक्स मार्किंग ऑन दैट वन. But anyway, just cover these things. You should be fine, inshallah. Okay? जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए डेटा सर्विसेज के, कवर दोज थिंग्स. ओके, ये हमने क्लास में भी कवर किए हैं, बट अगेन नए टॉपिक्स हैं, सो गो ओवर देम. आई ट्राई टू गिव यू द क्विज बाय टुमारो एज वेल, इंशाल्लाह, टाइम परमिटिंग. अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो आई डेफिनेटली गिव यू द क्विज एंड द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर डेटा सर्विसेज एज वेल. ठीक है, सही है इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. गुड लक इंशाल्लाह. यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. कोई इतना मुश्किल नहीं है फाइनल, तो यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैरा. और कोई क्वेश्चंस हैं जस्ट पोस्ट इट. आई विल ट्राई टू पोस्ट रिप्लाईज ऑनलाइन एज वेल इंशाल्लाह. ऑलराइट, थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़.